तो हम कभी भी ला सकते हैं साल में, जिसके पास जैसा टाइम होगा ना वो वैसे ही लाते हैं। गर्मी में भी लाते हैं, सर्दी में भी लाते हैं। जिस औरत के पास जैसे टाइम होगा ना, जब वो फ्री होगी तब जाती है जंगल से लकड़ियाँ लेके आती है। पहले तो कुल्हाड़ी से काटनी पड़ती थी, अब तो पावर चेन आ गई है, अब उतनी दिक्कत भी नहीं हम लोगों को काटने की। काट के हम इकट्ठा करके रखते हैं, जब बर्फ आए फिर निकाल के ले जाते हैं, सिर्फ तंदूर में जलाते हैं। 15 किलो हो जाता है इसका वेट, पूरे दिन में जलाते हैं हम लोग। A common practice for ages for the people of these parts of Himachal Pradesh has been to collect and store freshly chopped wood during the summer and autumn months and use it in the harsh winters to light their bukharis or traditional stoves used for space heating. Arranging the firewood before the winters, which lasts for about 5 to 6 months here, is an activity that consumes a majority of the local population of the Himalayan region. 70 to 80% of the families use the same heating mechanism, one that is used for multiple purposes, including cooking. अगर बर्फ़ गिरती है तो फिर तो 3-3 दिन भी जलाना पड़ता है, सुबह शाम। इसमें खाना भी बनता है, पानी वगैरह भी हम लोग गर्म कर सकते हैं, रोटियां इसमें अच्छी बनती है, खाना भी अच्छा बनता है और स्वादिष्ट बनता है। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया। बुखारी? हाँ जी सर, बुखारी अलग अलग साइज़ में, और वो स्पेशली वो साइज़ है ये 2 बुखारी के। ये बड़े एरिया के लिए होता है ना? हाँ जी, खुले एरिया के लिए। आउटडोर में ये यूज़ होता है और इंडोर में ज़्यादा ये यूज़ होता है। Costing between 2,000 to 5,000 rupees, the demand for bukharis peaks during the winter months. Most locals are less prone to using electricity or LPG for heating their homes or using expensive devices like geysers. Instead, they prefer using these wood fire-based bukharis. The abundant availability of wood makes it an easier and cheaper option. 3-4 महीने का सीज़न होता है, 150-200 बुखारी तो आराम से निकल जाता है। आप मतलब कि सर्दियों का दिन अगर आप सुबह से कंटिन्यू जलाएंगे 8 बजे से या शाम को 8-9 बजे तक 12-12 घंटे, तो कम से कम 30-40 किलो लकड़ी दिन की इतनी लग जाती है। सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है, बंदों लाइटें चली जाती है, घर में खाना वगैरह बनाना होता है, बंदे बिजली का बिल नहीं दे सकते ना, तो कई बंदे तंदूर वगैरह यूज़ करते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए। Since 2012, the government of Himachal Pradesh has been pitching to become the first carbon neutral state in the country, a target they had set to achieve by 2020. But with the majority of its population so utterly dependent on fuel wood for daily living, the milestone has not been easy. If we talk about Himachal Pradesh, so on an average, every household is using 2,700 kg of wood in a year. And if we connect this to the deforestation is about 0.34% in 10 years time span. And the villages dependent on forests, they are consuming around 6 lakh tons of wood in a year. So in India, around 70% households are still using wood for their cooking application or something. But if you look at the same number for Himachal, that goes around 90%. Burning such large quantities of wood in the hills naturally has disastrous effects on the ecosystem. Beyond the obvious perils of deforestation, it adds to increasing levels of pollution in the Himalayan region because of an inefficient combustion system rampant in popular devices like the bukharis. So typically, to have a wood burning, you need to have, first of all, the fuel, which is wood. Then the proper mixture of air and fuel, which is gonna give you the oxygen in a right format and in the right proportion. Then only you will have a close to complete combustion. And if there is improper proportion of any of these components, you will have very inefficient combustion of the wood. And inefficient combustion of the wood can lead you to some particulate matters, some NOx and carbon monoxide, which are very dangerous to a human being. So because if we talk about the traditional chula, the carbon monoxide coming out of traditional chula is almost like 5,000 times higher compared to what is
available in the clean air. पहले जब आधा फुट बर्फ़ पड़ जाए तो हम घर से बाहर कहीं हिल नहीं सकते थे और बाकी दुनिया से हमारा कटअप हो जाता है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। 8-9 महीना हमें यहाँ पे हर चीज़, लकड़ी, पानी, घास, भूस, सब चीज़ का स्टॉक करना पड़ता है 8-9 महीने के लिए, इवन जून लास्ट तक। Aware of the deeply troubling consequences of being overly dependent on forest wood, some families in the higher altitudes of Himachal, like Lahaul and Spiti, have been slowly making the switch to more fuel-efficient, sustainable solutions. One of them is the Himalayan rocket stove. An efficient stove technology that supports almost complete combustion, this was developed by Australian entrepreneur Russell Collins specifically for use in the Himalayan context. आम बुखारी जो है लकड़ी जलाते ही तो उसका सक्शन जो है स्पीड होते हुए तो 70% जो आप हीट जो है पूरा फ्लू के द्वारा, पाइप के द्वारा बाहर चला जाता है। तो हिमालयन रॉकेट स्टोव में इसका जो इसको इस तरीके से बनाया गया ताकि इसका मैक्सिमम जो हीट जो है इसमें ट्रैप रहे। नंबर 2, उसका लकड़ी इसमें दूसरे बुखारी के मुकाबले जो 70% जो है जो आपका हीट जो इसमें ट्रैप रहता है और लकड़ी भी इसमें दूसरे बुखारी के हिसाब से आधा लकड़ी लगता है। 50% लकड़ी आप सेफ समझो उसमें। तो अभी ये हमारा नया मॉडल अभी इको 1 मार्क 2 है ये। इसमें हमने ये बदलाव किया दूसरे इको 1, इको 2 जो हमारे पहले मॉडल थे उनमें एस्ट्रे नहीं था। अब इसमें क्या है कि आपका एस्ट्रे इसमें आ जाता है ताकि आपको ईजी रहेगा। Using the same application as the Bukhari, it is still at ground level. But in order to reduce emissions from combustion, the Himalayan rocket stove uses a 2-box double burner system, ensuring a negligible amount of smoke. Traditional Bukharis use only the first box. ये है जो हमारा मैक्सिमम हीट जो इसकी वजह से ट्रैप होता है। So if we look at just the simple math, so a simple traditional chula will have, let's say, 5 to 10% thermal efficiency. If we, let's say, try to take out the additional waste heat, that can boost your efficiency to 40 to 45%. If we are going towards efficiency of 50% from 10%, you are bringing down your food consumption to 20%. The Himalayan rocket stove is a private limited company with majority Indian shareholding. The company employs about 20 full-time team members in India and also supports a number of dealer networks. और तकरीबन हम 6,500 परिवार को तो ये घरों में तो लग भी चुका है ये आपके लद्दाख, कश्मीर से लेकर सिक्किम और आपके भूटान, नेपाल, ये गढ़वाल और हिमाचल में तो खैर शिमला और किन्नौर भी खैर रेंज तो है ही है हमारे पास। Priced at 15,000 rupees, the stove is currently much more expensive than the Bukhari. But the company claims that it is already working on scaling up and on strategies to reduce pricing. तो उसमें ऐसा है कि लकड़ी का कंजम्पशन जो है थोड़ा कम है और हीट काफ़ी अच्छा हीट देता है और अच्छा सेकने के लिए सब परिवार के लिए अच्छा है। और दूसरा हमारा जो अपना लोकल यहाँ का बना हुआ तंदूर जो है उसमें ज़्यादा लकड़ी यूज़ होता है। हाँ, इतना फ़र्क है। जब धुआं कम निकलेगा तो पर्यावरण पर असर तो होगा ही, है ना। Apart from pricing, the efficacy of products like these can prove to be a game changer. Across the Himalayan states of India, right from Jammu and Kashmir through Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Bhutan, to parts of North Bengal, Assam and Arunachal Pradesh, the near constant need for indoor heating in the winters makes the demand for efficient burners invaluable. But can clean fuel burning options like the Himalayan rocket stove address the many impending problems of firewood dependency, black carbon emissions, and the well-being of the 30-odd million people that belong to the Himalayan region? It remains to be seen.